Hi everyone, this is Bhavka and today we have with us Miss Shubra. She is a hiker, blogger and also a media professional. Hi Shubra. Hi, Bhavika. It's so nice to meet your group of people through your page. Yes, I mean, I'm excited to just share my story with you guys. Thank you, same here. So Shubra, can you please give a brief introduction about yourself and introduce yourself to our viewers? Yes, so just to give you a little brief, I've born and brought up in Delhi with a normal childhood the way I was. I was always a very sporty person. So being a sports person, I have some sort of, inclination or some obsession with mountains. So it was always pulling me towards them. Like, as a sports person, I used to go for small hikes. But sooner or later, I realized this obsession needs to have some purpose also. So I started working towards that. Being a sports person, I got chance to go for nationals in multiple places in hills where I started hiking. And that started when I was in my 10th, 11th standard back then. So as a hiker. Even as a child, I was into a lot of social work also. I used to teach kids. We used to go for community services in slum areas where we used to teach the underprivileged. So these two things were always very, very close to me. But it happens, right? When you are making your career and when when you are, going through your career phase, these things always, are always on a back foot. So I thought it's probably one day when I'll have enough avenues, I'll go back to things which I love the most. So I built my career in media. I did my, I built my career in media for almost 18 years. I was working as a brand solution expert, worked in best corporate companies, starting from Star India to MTV to ByteDance. So I worked in multiple companies like this for almost 18 years. After leaving corporate world and during COVID only, I mean, this was the best period for me because I was already in health. I realized that this is a time when I can actually do something else also with my career graph. And I left the corporate world. Not that I completely left, but I thought that probably I'll start with sabbatical. But then eventually I took decision that okay, I have to put a stop and do this full time. Where my first project was with Uttarakhand. There was a government school where I was teaching, the middle school, not the senior secondary, but I was teaching middle school over there. Then from there, I took a leap and I went to Turtuk. It's a small village in Ladakh where I was teaching kids. And then the doors started opening. There were more avenues and opportunities I was seeing in Ladakh and in Kashmir. So I was teaching in a valley called Gurez in Kashmir, where I was teaching yoga, English. So these were the few things I was teaching in Kashmir. I stayed there for few months. I was teaching in Srinagar also, one of the schools in one interior school, I would say. I was teaching there. So I stayed in Kashmir for few months. After Kashmir, I got an opportunity to teach in Kargil because I really wanted to go to Kargil also. So that's where I was teaching kids in the middle school in one of the remote villages of Kargil. So I stayed there for a few months. So this is where my journey started in volunteer teaching. Besides that, I'm a hiker. I do whenever I get opportunities. So I have done, I've covered 5,000, 6,000 meters hike in India, in Nepal. I have done hikes around the world also, I would say, because I have gone to a couple of countries where I was doing cycling and I was hiking around. So this is where, I mean, it's a brief introduction which I'm giving you about my passion.
I'm obsessed with dogs. I'm obsessed with mountains and kids. So these are three things wherever I see, you'll see me with these three things in my portfolio also on Instagram. Yes. I, I have seen that in your bio. So your introduction was very inspiring. So let's get Thank further you. with the interview. In this Yes, please. process कि मतलब आपने इतनी सारी मीडिया में भी काम किया और अब आप हाइकिंग भी कर रहे हो, तो व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू हैव फेस्ड ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, और जब आपने करियर स्विच किया तो उसमें भी कुछ Hmm. प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो व्हाट आर द ऑल द Frank, प्रॉब्लम्स? एक्चुअली आई टेल यू, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था मीडिया में, इफ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, मीडिया में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और मैंने अपना मास्टर्स किया. उसके बाद I was lucky enough that I got through in a company like Star. So I started my career there. Initially, there were not too many challenges. Obviously, job में जो challenges रहते हैं वो ही रहे. But जब मैंने जॉब छोड़ने का सोचा था, that was the biggest challenge I would say, because my career graph was very very good. I left my job as a VP where I was working last. बट वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपका एक होता है आपका जो पे चेक आ रहा होता है हर महीने, वो नहीं आएगा. वो बहुत लोगों ने सोचा कि when you're doing so well, all of a sudden you're putting a full stop over there for something which you have not done ever. This was an untouched territory for me, where I had to start everything on my own from the beginning. And this was a scary challenge, honestly. I was learning yoga in between. I was doing yoga all along my life, but then professionally or at a certified level, I have not done. So I was learning yoga from Rishikesh, from few schools. I've learned yoga, and then I was teaching also. All of this was going alongside. But then the purpose was missing somewhere. I was just thinking, I need to do something more substantial. So when I was living in Uttarakhand, I realized that I really need to do something. So एक छोटा सा एक स्टोरी बताती हूँ. तो मैं वहाँ पर उत्तराखंड में एक जगह है औली करके, वहाँ पर रह रही थी. और कोविड का टाइम था, तो सब कुछ लॉकडाउन के अंदर था. तो मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उस टाइम मैं जॉब भी कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम. मतलब मैंने तब तक जॉब से, मतलब मैंने आई हैव नॉट रियली moved out of my corporate life. I continued doing that, yet I had a lot of time in my hand. तो एक मेरी एक स्टोरी है ओली की, वो बहुत लोगों को इंस्पायर भी किया है उसने. क्योंकि आप एक जब छोटे से गांव में, जो एक बहुत ही रिमोट एरिया है, जोशीमठ के ऊपर एक ओली करके, वहां पर है, जो काफी कट ऑफ रहा था ड्यूरिंग कोविड टाइम. अब वहां पर कुछ नेपाली फैमिलीज रहती थी जो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही थी. अब उनके बच्चे थे जो इधर उधर घूमते रहते थे. तो मेरे को लगा कि अब वो बच्चे ऐसे घूमते थे, मैं उनसे बात करना शुरू कर दिया. जब आप बात करोगे तो पता लगा कि वो स्कूल में नहीं जा रहे. तो मैंने सोचा कि चलो उन्हीं को पढ़ाना शुरू करती हूँ. तब तक मेरा कुछ ऐसा वो नहीं था फुल फ्लेजेड कि मेरे को कुछ किसी स्कूल में जाके पढ़ाना है, या मेरे को फुल टाइम वॉलंटियर वर्क करना है. तो मैंने सोचा कि चलो इन बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हूँ. तो वहां से, और फिर जहाँ मैं रुकी हुई थी, तो जो वहाँ का केयर टेकर था, उसने भी बोला कि मैम आप मेरे को इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दीजिए. तो मैंने कहा हाँ ये अच्छा है कि ठीक है, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा. मैंने इस तरीके से मैंने शुरुआत की थी. मतलब कुछ बोलते ना कि आप बिल्कुल फुल फ्लेजेड आपने कुछ प्लान नहीं किया. तो वहाँ बच्चे को पढ़ाना शुरू किया. वहां पर पहले 2 बच्चे थे, फिर 4-5 बच्चे हुए, और ऐसे करके मतलब आपकी एक छोटी सी एक ग्रुप बन गया है. तो उनको वहां से पढ़ाना शुरू किया कि चलो इनको पढ़ाते हैं. सिंस वर्क फ्रॉम होम है, और वर्क फ्रॉम मतलब फॉर दोज किड्स ऑल्सो, ये सब कुछ उनके लिए भी वर्क फ्रॉम होम ही था कि अभी तो स्कूल सब बंद है, चलो इनको पढ़ाना, ट्यूशन देना शुरू करते हैं. तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी टीचिंग की एक्चुअली. तो मैं बोलूँ अगर कि मैंने कोई टीचिंग का मेरे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो मैंने वहां से पढ़ाना शुरू कर दिया था. मतलब ऑनलाइन आप देख देख के कुछ कुछ जो चीजें थी वो मैंने शुरुआत की थी. फिर मेरे को लगा कि आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई वांट टू डू फुल टाइम फॉर सम टाइम.
Then I reached out to some organizations online, and luckily I got through with this organization called Tutuk Valley School. There's a school in Tutuk in Ladakh. I reached out to them, and I then landed there for teaching. So this was an eye opener, and I thought this is something which I really want to do full heartedly, and I was doing it. And then then I reached out to some other school also, because I thought from Tutuk I can go to Kashmir also, since a lot of people they wanted good teachers in a place called Bandipura. बांदीपुरा में ही, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपका गुरेज आता है. तो फिर मैं वहाँ गुरेज पहुंची. मैं गई तो वहाँ घूमने के पर्पज से थी, ट्रैक के पर्पज से गई थी. पर उन्हें पता लगा कि मैं योगा टीचर भी हूँ, तो वहां पर फिर मैंने योगा करा दिया. वहाँ योगा कैंप हुआ, मैंने योगा कराया. फिर पता लगा कि वहाँ टीचिंग का भी है. सो दिस इज हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड अनफोल्डिंग, and one after the other I started getting new opportunities to a new place where I started teaching. And the same thing happened in Kargil also. Since they saw few of my stories of Turtuk and they realized that I'm a volunteer teacher, they called me. And so वहाँ से मैं अगर बताऊँ तो तुर्तुक का स्टोरी मेरा देखा था. There's a lady called Catherine in ले. उन्होंने मेरा स्टोरी देखा. And then I went there to lay, and I did some project for women empowerment. और फिर उन्होंने, क्योंकि she remembered me for the work I was doing, she helped me with the Kargil school. So फिर ऐसे मैं कारगिल पहुंच गई. So I'm just saying that everything is so well connected. और फिर मैं कारगिल में मैंने मेरी लास्ट अभी जो मेरी वॉलंटियर टीचिंग थी वो वहां पर हुई. और उसके बीच में जब जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ट्रैक्स खुद करती भी हूँ और कभी कभी ऑर्गेनाइज भी कर लेती हूँ. तो दैट्स माय पैशन एरिया. यस. Okay. So, my next question is that all in these things, मतलब जो भी आपने किया है, तो उसमें आपने बच्चों को भी पढ़ाया, मीडिया में भी काम किया, तो इस पूरी जर्नी में आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा. बहुत. Yeah, so can you please share your learnings with us? I tell you honestly, मीडिया ने तो मुझे कॉर्पोरेट लाइफ सिखाई. मतलब और एक आपको एक स्टेबिलिटी मिल गई है. मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो मिली मेरे को वो कॉर्पोरेट से मिली. अब बोलते हैं ना कि आप पैसे कमा रहे हो, बहुत टाइम से पैसे कमा रहे हो, पर एक पर्पस नहीं मिल रहा कि आपको करना क्या है. मतलब आपने जो आपकी लर्निंग है उस लर्निंग को, दिस इज व्हाट माय बिलीफ इज, दैट until unless you don't share it with people, that learning is very shallow. आपने पैसे कमा लिए बट उसका एक पर्पस नहीं मिल रहा है. सो उस लर्निंग को मेरे को जो पर्पस देना था वो मेरे को टीचिंग से मिला. एंड ट्रस्ट मी, मैं स्कूल के अंदर हर दिन कुछ नया सीखा. मैंने हर स्कूल के अंदर जहाँ जहाँ मैंने टीचिंग की. श्रीनगर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ. तो मैं श्रीनगर पहले घूमने के हिसाब से गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट के अप्रूवल बहुत आराम से नहीं मिलते हैं. तुर्तुक में तो फिर भी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ थी. श्रीनगर में आई रीच्ड आउट डायरेक्टली टू द गवर्नर एंड टू द मिनिस्ट्री. और उनके थ्रू मेरे को उन्होंने वहाँ पर जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मेरा रिज्यूमे और मेरी मेल भेजी. तो उनको लगा कि अच्छा, सिंस आई एम डूइंग सम वर्क इन द सोशल सेक्टर, वी शुड रीच आउट टू हर. तो ऐसे और आप बिलीव नहीं करोगे, श्रीनगर के अंदर जो स्कूल था, एक वेजिटेबल मार्केट है, बहुत ही स्ट्रेंज है वहाँ पर, वो बहुत पॉपुलर है श्रीनगर के अंदर वो जो वेजिटेबल मार्केट है. मैं घूमने के हिसाब से गई और उन्हें पता लगा कि मैं वहाँ पर एक कहवा बेचने वाला जो आदमी था, वो मेरे से पूछ रहा था कि आप मैम क्या करते हैं. एंड ही इज वेरी पॉपुलर ओवर देयर इन द वेजिटेबल मार्केट इन दैट एरिया. उनकी काफी वीडियोज हैं जो वायरल भी हो चुकी हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कहवा बेचते हैं. तो उन्होंने मेरे से ऐसे पूछा आप क्या करते हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं टीचिंग करती हूँ एज अ वॉलंटियर. सो व्हेन ही गॉट टू नो, तो उन्होंने बोला कि मेरा अपना स्कूल है इन द वेजिटेबल मार्केट, व्हाई डोंट यू कम एंड जस्ट मीट देम. सो इट वाज वेरी स्ट्रेंज. मैंने मतलब, एंड इमेजिन कश्मीर, अभी जब मैंने जाना शुरू किया था
तब लोग काफी डरे हुए थे कि कश्मीर सेफ है या नहीं है। श्रीनगर वैसे भी वहां पर काफी इंसर्जेंसी के से निकला है वो, मैं ये क्वेश्चन और पूछने गुरेज। वाली थी कि टेररिस्ट रहते थे वहाँ पे भी। तो ये सेफ्टी पर्पज से, एंड दैट टू, मतलब मैं उस टाइम बिल्कुल अननोन टेरिटरी में जा रही थी, तो मेरे को ये था कि पता नहीं द प्लेस वेयर आई एम गोइंग इट विल बी सेफ और नॉट, वेदर आई विल बी सेफ और नॉट, बिकॉज आई वाज ऑल बाय माई सेल्फ। आई एम अ सोलो ट्रैवलर एंड अ ट्रैकर। तो ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे कि इफ आई एम गोइंग टू अ प्लेस लाइक दिस वेदर इट विल बी सेफ। आप बिलीव नहीं करेंगी, जब मैं श्रीनगर में थी, मुझे जिन जिन जगहों पे जहां मैं रुकी थी, they have given me so much love. They've given me a huge discount the place I was staying. Rather, उन्होंने बाद में तो मेरा फ्री ही हो गया था स्टे, क्योंकि since I was doing some work for the people of Kashmir, तो मेरा स्टे बिल्कुल फ्री था। प्लस जहाँ मैं टीचिंग कर रही थी, जो प्यार मुझे मिला वो बहुत अलग लेवल का था। दो आई कुडंट कंटिन्यू टीचिंग इन श्रीनगर in that school since मेरा जो अप्रूवल आना था from the government, which I was telling you, the mail which I sent to the government, that had come to me later, so I had to go to Bandipura where I have promised to teach. So I went there to Gurez. I was teaching there, and since it's a border area, तो वो थोड़ा सा ये डर तो रहता है कि आप बॉर्डर एरिया पे बिल्कुल, but it was, I tell you honestly, every day was so nice. The biggest challenge for me and people who fancy going to such places, I can only say that it's not easy living in a very remote area, in a remote village, because आप वहां पर रह भी रहे हो, आपके पास बहुत सारे, एक तो एक कम्युनिटी है जो बहुत ही क्लोज कम्युनिटी है जिनके साथ आप रह रहे हो, प्यार बहुत मिलेगा, पर जो जैसे आपको जो कंफर्ट में आप रह रहे होते हो वो कंफर्ट नहीं है। आप एक बिल्कुल अननोन जगह पे जा रहे हो, जो आपकी फूड हैबिट्स हैं वो भी नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है, आप इतनी ठंडी वाली जगह पे जा रहे हो कि आपको नहाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, या जैसे बाथरूम आपको में रहने की आदत है वो सब भी नहीं है। तो मतलब दूर से बहुत अच्छा लगता है। कई बार आप ऐसी जगह जा रहे होते हो कि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होगा, और जैसे आपको अटैच बाथरूम नहीं मिलेंगे, या गर्म पानी नहीं मिलेगा, या जो आप खाना खाते हो उस टाइप का खाना नहीं मिलेगा। जैसे आई एम अ वेजिटेरियन, अ बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज ऑल दीज प्लेसेस दे आर मुस्लिम पॉपुलेटेड प्लेसेस। तो वहाँ पर मोस्टली जो आपका जो खाना मिलता है वो एक सर्टेन टाइप का मिलता है, बट दे वर सो नाइस टू मी, दे वर गिविंग मी वेजिटेरियन फूड। कोशिश हमेशा यही रहती थी कि मैम को दिक्कत ना हो, मतलब जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स होती थी वो मीट हो जाए। दो आई वॉज कैरिंग सम फूड फ्रॉम माई होम, बट आप कितना कैरी कर सकते हो, सो आई वॉज कैरिंग सर्टेन अमाउंट, बट they were making sure that my comfort is being taken care of. But still, your home is different when you're staying with somebody. In their homes are very, very different, but they were extremely nice to me, extremely nice. Again, अगर आप एक्सट्रीम कोल्ड को सहन कर सकते हो, लॉन्ग वॉक्स कर सकते हो, हाइक कर सकते हो, क्योंकि तुर्तुक के अंदर जो स्कूल था वो 3 किलोमीटर दूर था मेरे जहाँ मैं रुकी हुई थी। तो आपको वन वे 3 किलोमीटर जाना है, वो भी पहाड़ चढ़ के और उतर के जाना है। तो आप समझ सकते हो कि ये थोड़े चैलेंजेस होते हैं। अब छोटी सी चीज है, जैसे आप चपाती खाते हो, वो चपाती भी नहीं मिलेगी आपको। वहां पर एक सर्टेन टाइप की चपाती मिलती है, वो आपको देते हैं। वहां पर लोगों को, पहाड़ पे लोगों को ब्रेकफास्ट की आदत नहीं होती, तो आप एक सर्टेन तरीके से, अगर आपको ठंडा भी मिल रहा है तो आप खा लोगे, क्योंकि यू जस्ट हैव टू फिल योर स्टमक। बट अगर आपके बहुत सारे डिमांड्स होंगे तो आप ये काम नहीं कर सकते। यू हैव टू लिव इन अ कम्युनिटी टू बिकम पार्ट ऑफ देम, then only you are accepted. If you have too many demands, then you are not accepted by the local or by the people. मतलब आप कम्युनिटी सर्विस के लिए आ रहे हो, डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग देयर फॉर ट्रैवल और you want all the luxuries. You will not find that. So it's just that if you become them is when they'll accept you completely. So yeah. So this is something, these are the biggest challenges which I was facing. Plus
थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, तो उन्हें पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए आए हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कारगिल में तो उन्हें बताया था, जो वहाँ के सर थे, जो हेडमास्टर सर थे स्कूल के, उन्होंने बताया कि मैं कहाँ कहाँ पर मैंने काम किया है और मैं क्यों कर रही हूँ। दे वर हाईली ऑब्लाइज ऑफ द वर्क आई वॉज डूइंग। मैंने वहाँ पर बहुत सारी काउंसलिंग भी की, मैं ऐसे ऐसे लोगों को काउंसलिंग के लिए लेके आई जो उस छोटी सी जगह पे मतलब मतलब आप बोलते हैं ना, पॉसिबल भी नहीं था। सो आई फ्रॉम द आर्मी ऑफिसर टू नेवल ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, एसडीएम, तो इस टाइप के लोग आए थे। उन्होंने करियर काउंसलिंग की थी बच्चों के साथ। तो पहले मेरे साथ एक डिस्ट्रिक्ट जुड़ा, जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही थी, जो विलेज था, एक जुड़ा। फिर उसके बाद देयर वर मल्टीपल स्कूल्स गॉट कनेक्टेड विद मी, क्योंकि उन्हें पता लगा, क्योंकि सारे गवर्नमेंट स्कूल कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से थ्रू व्हाट्सएप। तो उन्हें पता लगा कि ऐसा कुछ हम मूवमेंट कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर स्कूल। तो बाकी स्कूल्स को भी उन्होंने थ्रू वीडियो वर्चुअल दिस थिंग, they connected other schools also because they wanted to make use of these counseling, career counseling sessions. So we've connected them through that. So it was a big success, because a lot of kids, got opportunity to meet some of these experts through online. So yeah, I managed to do that in during my stay. So it was very good. Plus, I was teaching them yoga. I was and participating in a lot of extracurricular activities. So all of this was part of it, and it was an eye opener because I was teaching every day. Like I didn't know certain fields, but when we were doing these career counseling, even I got to learn a lot of things through these sessions. So it was very very good. And plus, when you're teaching, you learn so much with kids. Uh, so yeah, so far it's been so fulfilling. My next question is कि आई गेस ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ टॉपिक है बट मेरे अंदर के जर्नलिस्ट पे जानना है कि जैसे आप कश्मीर में रहे हो, श्रीनगर वगैरह ये सब मोस्टली टेररिस्ट एरियाज ही कंसिडर किए जाते हैं और यहाँ पे मतलब हम जा भी नहीं सकते ज्यादा। Insurgency, ओ हाँ। safety की point of आप view से. या तो आपने यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटीज फेस की या फिर आपने लोगों के बीच में कुछ देखा इन जैसे बहुत ज्यादा हेट रेट भी है कश्मीर के लोगों में इस चीज No, को लेके तो I या tell you honestly, I have to tell you this. मैं कश्मीर काफी रही हूँ, मतलब इन लास्ट 2-3 years मेरा, मतलब बोलते हैं ना कि मेरा आना जाना काफी रहा है, और मैं वहां रही हूँ 6 months से मैं वहां रही हूँ। और मुझे इतना प्यार मिला, मुझे नहीं लगा फ्रैंकली इंसर्जेंसी है। और वहाँ के, देखिए, अगर आप बताएंगे कि आप गवर्नमेंट के थ्रू जा रहे हो, तो दे विल नॉट बी टू वेलकमिंग। सिंस आई रीच्ड आउट to the schools directly, they were government schools only. Uh, they know that I'm working for the people of Kashmir. So they were extremely, extremely helpful to me. मतलब मेरे को कई बार तो ऐसा होता था, कभी कोई मेरे लिए वॉलनट लेके आ रहा है किसी घर से, कभी कोई मुझे इनवाइट कर रहा है घर के अंदर खाने के लिए। Though I was told to be little watchful of my activities and not to share too much about my personal life, I was not really being vocal about those things. But since I was living there with them, and so many people knew me through, since I've gone there first time मैं जब गुरेज गई थी, तो एक ट्रैक गवर्नमेंट जो आर्मी ने अरेंज किया था, मैं उसके थ्रू गई थी। तो मेरे को ऑलरेडी वहां पर कुछ लोकल जान गए थे, क्योंकि मैंने जब ट्रैक खत्म हो गया था तो आई स्टेड देयर टू टीच योगा, क्योंकि वहाँ पर वो योगा कैंप हुआ था। तो वहां पर ऑलरेडी मुझे कुछ लोग जान गए थे। तो जब आप जान जाते हैं, और प्लस मेरा आर्मी में थ्रू एक कॉन्टैक्ट से, तो वो दे वर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो मेरे को मैं सही बताऊं तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई जो और लोगों को आ सकती थी, सिंस आई वाज ऑलरेडी फ्रेंड्स विद लॉट ऑफ आर्मी पर्सनल। तो या, एंड प्लस विद द लोकल्स आल्सो, सो they were just taking me to places and they were very helpful to me. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कश्मीर एक बहुत ज्यादा
रिमोट एरिया है, तो वहाँ पे एजुकेशन की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। जैसे हम तो दिल्ली में रहते हैं, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है एजुकेशन क्या? अवेल करने में, बट वहाँ पे बहुत ज्यादा होती होगी। तो कैसे एजुकेशनल इनइक्वालिटीज आपने देखी हैं दिल्ली में और कश्मीर के बच्चों में? Since I was in a very remote area of Kashmir, गुरेज के भी एक गुरेज का एक और विलेज था जहाँ पर मैं थी। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ टीचर्स पहुँचने, अच्छे टीचर्स पहुँचने, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। पर देखिए इनइक्वालिटीज तो हैं, क्योंकि ज्यादा टीचर्स हैं नहीं उनके पास। तो एक दो टीचर ही हैं जो पूरे स्कूल के अंदर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो जब ऐसे वॉलंटियर वर्क जाते हैं, तो वॉलंटियर्स जाते हैं और वॉलंटियर वर्क होता है वहाँ पे, तो उनके पास जो लर्निंग हमारी है, वट एवर लर्निंग आई कुड प्रोवाइड, सिंस आई हैव लिव्ड ऑल माई लाइफ इन सिटी, प्लस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं उन बच्चों के साथ शेयर कर पाई, वो उनके लिए सबसे बड़ी चीज। तो मैं नए नए गेम्स खिलाने की कोशिश करती थी, मैं नए एजुकेशनल गेम्स जो मैंने इंट्रोड्यूस किए वहां पर, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मैंने शुरू करी उन जगहों पे जहां पर उन लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा करके भी बच्चे सीख सकते। तो जैसे मैथ्स को अगर आप नॉर्मल तरीके से सिखाओगे तो बच्चे इंटरेस्ट एक स्कूल के अंदर वैसे ही रहेगा, पर अगर आप उसको इंटरेस्टिंग बनाओगे कि ऐसे भी सीख सकते हैं, या स्पेलिंग कैसे सीख सकते हैं, उनको गेम्स के थ्रू स्पेलिंग सिखाना, या इंग्लिश को आप नए नए तरीकों से सिखाना, तो उससे बच्चे जल्दी पिकअप कर रहे थे। सो आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस दीज न्यू वेज ऑफ टीचिंग, जो वहां पर मिसिंग था, क्योंकि स्कूल के जो टीचर्स थे वहां पे, वो बुक से पढ़ा के ही सिखा पा रहे थे, वो नए तरीकों से नहीं सिखा रहे थे। तो वो मैंने एक चीज नई इंट्रोड्यूस करी, तो इसीलिए। या अगर हमने वहां पर मैंने जैसे ड्रामा हम करते थे, तो ड्रामा के थ्रू आप कैसे मॉरल साइंस सिखा सकते हो, तो नई नई चीजें इस तरीके से हमने इंट्रोड्यूस की थी वहां पे। एंड प्लस आई टेल यू ऑनेस्टली, एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपको खाने की चीजें मिल रही हैं या जो रहने का उनका तरीका है, पहली बात तो आपको बोलते हैं ना, when you in Russia you have to, or when you are in France you have to become French, like that. So not that I could learn their language, but when I was living with them, with the locals, I tried to imbibe a lot of local things. उनका रहन सहन, और थोड़े से, और जैसे आप अपनी सिटी के अंदर तो किसी भी टाइप के कपड़े पहन सकते हो, क्योंकि आपको अपनी सिटी का पता है। आप जिस कम्युनिटी में हैं, यू ट्राई टू बी लिटिल मोर रिजर्व्ड। आप वहां पर वो चीजें नहीं कर सकते फुली जो आप अपनी सिटी में करते हो। सो आई ट्राई टू मिंगल अराउंड विद द लोकल्स, ट्राई टू I tried and imbibe lot of things, what locals could accept it. So yeah, I tried to be more reserved as far as my attire was concerned. And yeah, I mean, I was just trying to be with the local, like them, in the houses. Yeah, That what is your yeah. message to people watching this interview? So I tell you, a lot of people reached out to me. One main message to anyone who's interested to do volunteer work. A lot of people had reached out to me that आप बहुत घूमते हो, आप, they see the the niceness through the videos, that oh, it's a fun thing. It is definitely a fun thing. Volunteer work is quite fun thing, but then don't go there only seeing the fun videos. Whenever you are going, remember you are doing this. This is a social cause. It's a philanthropy work you're doing. You have to let go of your ego and certain things which you are very comfortable with. If you're doing this with a purpose, then only come forward and do it. Just don't come forward and see, oh, I get to travel to these places. You know, Obviously, travel will be part of it, and you'll see some exciting places, but then that's not about it. You have to live in little hardship. If you're okay with it, then only come. So that's my message to every volunteer, that if you have a purpose
and if you can give something back to the society in some manner without any without keeping any any with very selfless motive, then only come सो तब आप कर सकते हो। अगर आपको बच्चे पसंद है, थोड़ा सा पहाड़ चढ़ना उतरना, अगर आपको माउंटेन एरिया पसंद है, क्योंकि टीचिंग आप कहीं भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरली यू गोइंग टू ओनली माउंटेन्स। सिंस आई वाज लिव आई because I'm obsessed with mountains and mountain life, and that's why I chose mountains. But if you love teaching and if you think that you want to make your life really meaningful, then choose the place which you really wish to go to and just try and give your some time out of the league, in the sense आपने इतने साल अगर काम किया है, एक दो महीने तो आप निकाल ही सकते हो वॉलंटियर वर्क के लिए, so try and do that and give it back to society in some manner. So that's my message to everyone. Thank you very much, Shubhra, for joining us. Thank you, Bhavika. It's so nice to talk to you and to your community through your page. It's very nice. Thank you.